Good morning dear students, how are you? I hope you all are well. Today we are going to start our second part of chapter number 2 and the name of the chapter is parallel lines. Okay, in that we are going to learn the theorems. In earlier part we have already learned what is corresponding angle, what is angle in linear pair, what is interior angle, what is alternate angle, what is vertically opposite angle. Now in this part we are going to prove them how they are satisfied with a given condition. If suppose if alternate angles are congruent, then how they are congruent. Okay, so in this part we are going to prove them, which is known as theorem. Today we will solve three theorems. First theorem is interior angle theorem, second theorem corresponding angle, and third theorem alternate angle theorem. Now come to your first theorem, interior angle theorem. If two parallel lines are intersected by a transversal, the interior angles on the either side of the transversal are supplementary. What do you mean by supplementary? The sum of the angles will be 180. You can see in this figure, the line L and line M are parallel and line N is transversal. Okay. So what is the given part in this question? In above the figure, line L parallel line M and the line N is transversal line. Now we know the property of transversal line. It intersects two parallel lines at a two distinct point, and due to this two distinct point, there is a formation of 8 angles to this all. Now we have to prove here a transversal, the interior angles on the either side of transversal means on this side as well as on your right hand side are supplementary. Now which angle will be known here? Interior angle B and angle C, and here angle BA and angle B. These both angles are supplementary, means the sum of these angles are 180 degree. So measure angle A plus measure angle B is equal to 180. It means it is supplementary. Similarly on this side, the measure angle C and measure angle D will is equal to 180. That we have to prove here. हमको साबित करके दिखाना है कि ये 180 डिग्री होते हैं. Now see this diagram. First, what is information given in question? Line L parallel line M. Okay. So my dear student, in your textbook it is given very complicated. First of all, it is given that we have to make the assumption angle A plus angle B less than 180, then more than 180. Okay, and then the measure angle A plus measure angle B equal to 180. It is too complicated. We will solve this question by direct method, which I have done on blackboard. You can see. First, I am going to prove here line L parallel line M. Okay. It is already given in the question. Line L is parallel to line M and line N is transversal. Okay, now we know the property of transversal and two parallel line. Due to this, which kinds of angles is formed here? Corresponding angle, alternate angle, vertically opposite angle, interior angle. Okay, so you can see here angle E and angle B, these both are corresponding angle because these both are coming on the same position on the parallel lines due to this transversal. So angle E and angle B both will be equal to each other. Why? Because both are corresponding angle. So I am writing over here angle E is equal to angle B. Why? Because corresponding angle test. Okay. Now see, measure angle E plus measure angle A is equal to 180. See here, measure angle E plus measure angle A. These both have a measures of 180 degree. Why? Because an angle in linear pair. You can see here. Okay, this angle and this angle is forming an angle in linear pair. Okay, so their measures will be 180 degree. Here you have to write down what is its region, an angle in linear pair.
Now I am giving equation 1 to this and equation 2 to this. But my dear student, if I am going to compare equation 1 and 2, what I will come to know? The value of measure angle E is equal to the measure angle B. आप देख सकते हो कि मेजर एंगल E किसके इक्वल है? मेजर एंगल B. तो मैं इस मेजर एंगल E की जगह पर मेजर एंगल B लिख सकता हूँ. यस. From 1 and 2 I come to know this, the measure of angle E is equal to the measure of angle B. So instead of this measure angle E, I am going to write from 1 and 2 measure angle B, and the remaining part I am going to write as it is. You can see here. Now it's proof. Measure angle B plus measure angle E is equal to 180 degree. प्रूफ हो गया. सिमिलरली आप देख सकते हो कि जिस तरह से हमने इस पार्ट में किया उसी प्रकार से हमारा लेफ्ट साइड के पार्ट में भी हम कर सकते हैं. तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि सिमिलरली मेजर एंगल C प्लस मेजर एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्री. तो हियर वी हैव प्रूफ आवर इंटीरियर एंगल थ्योरम. Coming to the next part, corresponding angle test. What it is? The corresponding angles formed by a transversal of two parallel lines are of equal measure. Now we have given here two parallel lines and line N is transversal. Now we have to prove here a corresponding angle formed by this transversal and two parallel lines have an equal measure. दोनों का measures क्या होता है? Equal होता है. ये हमें proof करके बताना है कि अगर दो लाइन पैरेलल है, एक लाइन इसको ट्रांसवर्सल करते हुए जा रहे हैं, तो जो corresponding angles के पेयर बनते हैं वो क्या होते हैं? Equal होते हैं. तो देखो पहले हमको गिवन पार्ट में जो लिखा है हम दिया गया है हम लिखेंगे लाइन L पैरेलल लाइन M, both lines are parallel, and line N is the transversal. Line N is transversal. Now here what we have to prove? Measure angle A and measure angle B, both are equal. So let us start with our this point itself. Line L parallel line M and line N is transversal. What it is? Transversal. It is already given in the question. ये क्वेश्चन में हमको देख ही रखा है. तो आप देख सकते हो कि ये एंगल और ये एंगल दो पैरेलल लाइन के बीच में आ रहा है. तो ये कौन से एंगल हो गए? ये इंटीरियर एंगल हो गए. एंड द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ इंटीरियर एंगल इज 180 डिग्री. अभी हमने प्रूफ किया फर्स्ट ईयर में. तो हियर मेजर एंगल B प्लस मेजर एंगल C is equal to 180 degree. Here you will write interior angle theorem. Okay, give it equation first. Now here you can see measure angle A plus measure angle C. It is forming an angle in linear pair. Okay, so their sum of measure will be also 180 degree. So here you will write measure angle A plus measure angle C is equal to 180 degree, and you will write a region here, an angle in linear pair. Okay, give it equation 2. Now if you compare here equation 1 and 2, both the sum of both the sum of measure of both angle is equal to 180 degree. Here also measure angle A plus measure angle C have a measures of 180 degree. ओके, दोनों के दोनों का मेजर्स क्या है? सप्लीमेंट्री है. तो इसका मतलब ये दोनों एंगल की जो पेयर है एक दूसरे के इक्वल होंगे. तो यू विल राइट हियर फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 व्हाट यू कम टू नो कि दोनों पेयर्स क्या है? इक्वल है. तो लिख सकते हो मेजर एंगल B प्लस मेजर एंगल C इज इक्वल टू मेजर एंगल A प्लस मेजर एंगल C, क्योंकि दोनों की वैल्यू क्या है? सेम है. But if I am going to see carefully, measure angle C is here also and here also. Now this both will get cancelled. So what is left here? Measure angle B is equal to measure angle A. Write down in proper way. Measure angle A is equal
equal to major angle B. Hence we have proof here what we have to prove. Okay, तो यहाँ पे हमने प्रूफ कर दिया करस्पॉन्डिंग एंगल थ्योरम. थर्ड वन, अल्टरनेट एंगल थ्योरम. आपको पहले ही बताया जा चुका है अल्टरनेट एंगल क्या होता है कि अगर दो पैरेलल लाइन एक दूसरे दो पैरेलल लाइन है और उससे कोई ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करते हुए जा रहे हैं तो जो जेड के शेप में फॉर्म होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, अल्टरनेट एंगल बोलते हैं. ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे जेड के शेप में कौन सा फॉर्म हो रहा है, एंगल सी एंड एंगल ए. अपने को इसमें सेम कंडीशन सब सेम दिया गया है, इवन वही रहेगा कि लाइन एल पैरेलल लाइन एम एंड एन इज ट्रांसवर्सल. Now we have to prove here angle A and angle C are congruent. Both have an equal measure. देख सकते हो the alternate angle formed by transversal of two parallel lines are of equal measure. दोनों का measure क्या होता है, equal होता है. So let us begin with our diagram. जो फिगर दिया गया उसी से स्टार्ट करते हैं. आप देख सकते हो कि मेजर एंगल ए और मेजर एंगल बी दोनों क्या होंगे, एंगल इन लीनियर पेयर. आप देख सकते हो दो अपोजिट डायरेक्शन जा रहे हैं यहाँ पर और इनका ये क्या है, आर्म यहाँ पे इन बिटवीन कॉमन है. ओके, तो मेजर एंगल ए प्लस मेजर एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री. राइट डाउन हियर एंड एंगल इन लीनियर पेयर. Now give it equation 1. ठीक उसी प्रकार से पहले आप ये लिख दो कि लाइन L पैरेलल किसके है, लाइन M एंड लाइन N इज ट्रांसवर्सल. कौन सी लाइन है, ट्रांसवर्सल. ठीक है, ये ट्रांसवर्सल है. दिस इज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन. If these two lines are parallel and this is transversal, then an angle formed in between these two parallel lines are interior angle. Which angle? Angle C and angle B, and both have a measures of 180 degree. So here you will write major angle B plus major angle C is equal to 180. Write down here interior angle theorem. ओके, अभी हमने पढ़ा है फर्स्ट थ्योरम में कि अगर दोनों एंगल इंटीरियर है तो उनके मेजर्स क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री. नाउ गिव इट इक्वेशन 2. हियर आल्सो यू कैन सी बोथ द पेयर ऑफ एंगल्स हैव अ मेजर्स ऑफ 180 डिग्री. हियर आल्सो बोथ पेयर हैव अ मेजर्स ऑफ 180 डिग्री. तो सिमिलरली टू आवर थ्योरम नंबर 2 वी विल डू हियर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2. इक्वेशन 1 एंड 2 से आपको क्या पता चला कि इसका मेजर्स भी 180 है, इसका मेजर्स भी 180 है. इसका मतलब ये लेफ्ट हैंड साइड इस पार्ट का और लेफ्ट हैंड साइड इस पार्ट का दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे क्योंकि दोनों का इक्वल मेजर है. तो मेजर एंगल ए प्लस मेजर एंगल बी हैव अ इक्वल टू मेजर एंगल बी प्लस मेजर एंगल सी. वंस अगेन इफ यू नोटिस here measure angle B have a common in both the side, so it will get cancelled. So what is remaining part here, measure angle A is equal to measure angle C. Hence we have proved our theorem here. हमने प्रूफ कर लिया. ओके, तो डियर स्टूडेंट ये थियरम है जो आपको आगे भी काम आएंगे. आप अगर पहले हायर क्लासेस में पढ़ोगे जब 10th में 11th में, ठीक है, तो आपको ये सारे आपके क्लास वर्क में लिखना है. ठीक है, और एज यूजुअल जैसे आप फ्राइडे को ग्रुप में भेजते हो आपको मुझे शो करना है. तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू वेरी मच, बाय.